Welcome back, my dear students. I am your SST teacher Vandana Joshi and you are watching SST June. So students, before going to start our next chapter in history, let's see few pictures which are related to our today's topic. So students, as you have seen a video in which you have seen few monuments and buildings. Students, they are containing a different art and architecture. So what it is? Students, to know more about the art and architecture, that how nicely the monuments and the buildings were formed by the builders. So students, to know about these things, today we are going to start our 5th chapter in history, that is rulers and buildings. So students, the topic actually it is based upon the art and architecture which was used by the emperors and the builders during the medieval period. So students, in this chapter today we will cover these topics. So first of all, we will see introduction of architecture, means what is architecture. Second, engineering skill and construction. Then building, temples, mosque and tank. Next topic, gardens, tombs and forts. And the last topic will be regions and empires. So students, let's see what we will study in this chapter with our first topic, introduction of architecture. So students, during the medieval period, the king and their officers built two kind of structure. First, the religious monument and second, the secular monument. यानी कि उस समय मेडिवल टाइम पे जो किंग्स और उसके ऑफिसर्स थे, उन्होंने दो तरीके के मॉन्यूमेंट्स बनवाए, एक रिलीजियस पर्पस और दूसरा सेकुलर पर्पस. व्हाट इज दिस? Religious monuments are the buildings that have been built and used for the religious purpose, like mosques and the temples. And while if you talk about the secular monuments, the secular monuments are buildings used for any purpose other than religious. Okay, like the Qutub Minar, Lal Killa, Taj Mahal, these are the buildings which are used for every purpose. Question is there, what the monuments are telling us? यानी कि monument से हमें क्या पता चलता है, वो हमें क्या बताते हैं? So students, the monument tell us much information about the engineering skills and building techniques of a particular period. मीन्स किस टाइम पे किस तरीके की इंजीनियरिंग और किस तरीके के बिल्डिंग्स जो थी वो बनती थी, इसके बारे में हमें मॉन्यूमेंट्स बताते हैं. ओके, सो दैट विच इज़ नोन एज आर्किटेक्चर, यानी कि जो प्रोसेस थी, जो इंजीनियरिंग थी, यानी कि जो आर्ट थी बिल्डिंग्स बनाने की, दैट इज़ ओनली नोन एज द आर्किटेक्चर. ओके, द आर्किटेक्चर ऑफ मेडिवल पीरियड ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. यानी कि जो मेडिवल टाइम का जो आर्किटेक्चर है 800 से 1600 के अराउंड तक का जो आर्किटेक्चर है, विच वी कैन डिवाइड इनटू 3 मेजर पार्ट्स. सो व्हाट आर दीज? फर्स्ट इज अर्ली मेडिवल. Okay, second is Sultanate period. Sultanate means the buildings which were formed during the Delhi Sultanate. And then after that, when the Mughals came, they brought a different kind of architecture that is known as Mughal period architecture. Students, you have already studied about the art and architecture in your previous class 6. So here we will study more information about the art and architecture which was used in the medieval period. So for that, now we will start our second topic, that is engineering skills and the construction.
So students, if we talk about the engineering skills and the construction during the medieval period, it was very insightful and it was very tough to the architects. Those were forming the structure of a particular building. Students, if we talk about the engineering skill of that time, the architect, it was known as superstructure. Why superstructure? Because it was very tough to form a building. उस समय पे जो बिल्डिंग्स थी वो बनाना बहुत मुश्किल था. उतनी सारी टेक्निक्स जो मशीन्स होती हैं वो सारी उस समय पे अवेलेबल नहीं थी. ओके, बिकॉज वन मोर रीज़न इज़ बिहाइंड दैट टू एलोबरेट एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ थिंग विथ अ सोफिस्टिकेटेड स्किल, यानी कि बहुत बारीकी से उन चीज़ों को दिखाना और बहुत अच्छे से, ताकि वो लोगों को भी पसंद आए, इस तरीके से उनको दिखाना. एंड द सोफिस्टिकेटेड स्किल एंड इट इज़ रिक्वायर्ड अ गुड स्किल, यानी कि उन सब चीज़ों को दिखाने के लिए उनको बहुत अच्छी स्किल्स की ज़रूरत होती थी. एंड if you can see a simple example I have given to here, that is of Quwwat al-Islam Mosque, Delhi. It is the a kind of structure. It is just a figure of that. It is also showing a simple example of that superstructure which was introduced by the architecture. ये जो मॉस्क्यू है, इट इज़ नोन एज द कॉर्बेल्ट टेक्निक, यानी कि इसमें जो टेक्निक है, इफ़ यू कैन सी इन दिस मॉस्क्यू, इट इज़ इन दिस शेप. यू विल सी इन योर बुक एज वेल. You can see in that figure number 2A and 2B. If you will see the areas, it is known as the corbelled technique, which was introduced by the architecture in the 12th century. Okay, students. So students, to know more about the engineering skill and the construction, let's see few pictures. So students, let's see figure number 3A in page number 62 in your book. So it is a construction of the temple in the early 11th century. It is the temple of the Kendriya Mahadeva temple. And if you will see in figure number 3B, the 3B figure is the plan of this temple which you have seen before that. That is the Kendriya Mahadeva temple. Okay, students, if you will see in figure number 4, in this you will see again a temple, the Rajeshwara temple at Tanjore, which had the tallest shikhar. I hope you have studied about the shikharas in your 6th class. Shikhara are related to the topmost area of the building. जैसे आप देखते हैं, जिसको अभी हम टावर भी बोलते हैं, इसी तरीके से पहले स्टूडेंट्स शिखर होते थे जो कि टेम्पल्स के ऊपर से बने हुए होते थे. ओके, एंड द टॉलेस्ट शिखर ऑफ द टेम्पल इन द तंजौर, इट इज़ ऑफ राजराजेश्वरा टेम्पल. एंड इफ़ यू विल सी इन फिगर 5A, द 5A इज़ शोइंग अ ट्रू आर्च, मीन्स एक पूरा हाफ सर्कल बना हुआ जिसमें आर्क बना हुआ होता है. That is shown in figure number 5A. And if you will see in 5B, here is also a picture of the arch which is of Alai Darwaja. And in figure number 6, it is a painting from the Akbarnama which is showing the construction of the water gate at the Agra fort. So here you can see different type of art and architecture during the early medieval period and during the Mughal period. So what is the difference between them? During the early period there are used the गर्भगृह and the शिखरास. जो अर्ली टाइम है उसमें आपके गर्भगृह और शिखर जो थे. एंड वन मोर थिंग इज़ दैट इज़ नोन मेन हॉल महामंडपा, ये चीज़ें प्रयोग की जाती थी. एंड इफ़ यू विल सी इन द मुग़ल टाइम, यहाँ पे आपका जो स्पेशली जो आर्किटेक्चर का पहचान थी, दैट इज़ अ ट्रू आर्च, यानी कि जो हाफ सर्कल था, आर्क था, वो इसमें दिखाई देता है. मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ द मुग़ल टाइम दे आर शोइंग द आर्च. ओके students, while the builders and the sultans or the kings,
they were starting to form a structure of a building, especially the temples and the mosques. The structure of the temples and the mosques was very beautiful. Why it was beautifully constructed? Because that was the place where they can do worship, and it is also related to their religious feelings. So that's why the mosques and the temples were beautifully constructed. ओके यानी कि जो टेम्पल्स और मॉस्क्यूज थे वो बहुत ज़्यादा सुंदर बनाए जाते थे. वाई? बिकॉज ये जो एरियाज़ थे वो इनके जो रिलीजियस वर्च्यूज़ होते हैं या फिर इनके धर्म से संबंधित होते थे, राजाओं के या फिर सुल्तान के, तो इसलिए वो काफ़ी सुंदर और आकर्षक बनाए जाते थे. ओके, सेकेंड थिंग, इफ़ यू टॉक अबाउट द बिल्डिंग्स, द टेम्पल्स एंड द मॉस्क्यूज एंड द टैंक्स. वाई? They were the source to show their power, their wealth and the devotion of the patron. मीन्स जो आपके टेम्पल्स और मॉस्क्यूज थे वो एक तरीके से दिखावे का काम भी करते थे. बिकॉज whosoever was the king or sultan on their time, they built a big structure of a temple or a mosque. So through that they can show or demonstrate देयर पावर, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैटर्न. यानी कि जो मंदिर थे या फिर मॉस्क्यूज थे, अगर जितने बड़े होते थे वो उतना ही उसको पावरफुल या फिर उसको वेल्दी दिखाते थे. साथ ही साथ वो उससे उसकी जो किसी भी चीज़ के जो रिचुअल्स वगैरह थी उसके बारे में पता चलता था. यानी कि वो कितना डिवोटेड है अपने जो उसका धर्म है उसके प्रति वो कितना डिवोटेड है. दैट was shown by the big temples and through the big mosques. For example, we can see example which has been given in your book. It is of the Rajeshwara temple. In that, an inscription mentioned that it was built by King Rajadeva for the worship of his god. यानी कि जो मंदिर था वो राजराजादेवा द्वारा बनाया गया था उसके भगवान की पूजा करने के लिए. एंड इफ़ यू विल सी, नोटिस हाउ द नेम्स ऑफ द रूलर एंड द गॉड आर वेरी सिमिलर. यानी कि जो रूलर यानी कि राजा था, राजादेवा, और उसके गॉड का नाम क्या था, एकदम सिमिलर था. सो व्हाई द रूलर्स वर डूइंग सो? एंड दिस इज़ बिकॉज दैट इज़ वेरी ऑस्पिशियस to the king to show devotion to their god, their god and the goddesses. यानी कि अपने राजा जो थे वो अपने ईश्वर के प्रति अपनी जो डिवोशन होता है उसे दिखाने के लिए कभी कभी ऐसा भी करते थे. एंड देन आफ्टर दैट दे हैव गिवन टू द नेम ऑफ द टेम्पल, उन्होंने जो मंदिर था उसको क्या नाम दिया, राजेश्वरम. यानी कि उसने अपने ही नाम से उसमें अपना और अपने ईश्वर का दोनों का नाम इंक्लूड करके मंदिर का नाम राजेश्वरम दिया. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द medieval period, second one, this is Sultanate architecture. It was started in India by Qutbuddin Aibak. Firstly, he started to formation of a building that was known as Qutub Minar. He didn't complete it and it was completed by Iltutmish. And many buildings were there which were started in the Qutbuddin's empire that was known as Adhai Din Ka Jhopda. Students, the Sultan also done their work in the same way as the Hindu emperors have done. यानी कि जिस तरीके से हिंदू एम्परर अपने वेल्थ और अपने पावर और अपना डिवोशन अपने गॉड के लिए दिखाने के लिए करते थे, इन द सेम मैनर द मुस्लिम रूलर्स ऑल्सो स्टार्टेड टू फॉर्म द मॉस्क्यूज थ्रू विच दे कैन शो देयर पावर, डिवोशन एंड द वेल्थ, एज वेल एज दे कैन शो देयर डिवोशन टू देयर रिलीजन. ओके, यानी कि वो भी अपने जो धर्म के लिए जो आस्था होती है और या फिर अपनी पावर दिखाने के लिए उन्होंने बिल्डिंग्स का बनवाना शुरू किया. ओके स्टूडेंट्स, हियर इज़ अ वन मिस्टीरियस थिंग दैट
whenever the kings want to attack and they want to destroy any kingdom, so firstly they were attacking to the temples on that kingdom. यानी कि जो राजा थे अगर किसी किंगडम को ख़त्म करना चाहते थे तो सबसे पहले वो उस राज्य के मंदिरों पे अटैक करते थे. Why so? Because they know that the temples are the main source of the revenue and they were the main source of the all cultural and the economical activities. As you have studied, student, in your 6th class that during the ancient time the temple was the area where the all kind of activities were happening. Even the court of the king was also gathered in the temples, Garbhagriha or the Mandalam. ओके यानी कि जो राजा थे उनका जो कोर्ट यानी कि दरबार था वो भी अधिकतर मंदिरों में ही लगता था. एंड बिकॉज देयर डिवोशन टू देयर गॉड गॉडेसेस एंड देयर एम्परर एंड those were the enemies of the particular kingdom. They were attacking basically on their temples to loot them and to take over the economy in their hand. For example, students, if you will see in your book page number 66, here is a caption. If you will see here in this third para, if you will see here, it has written Sultan Mahmoud of Ghazni was a contemporary of Rajendra I. During the campaigns in the subcontinent, he attacked the temples of defeated kings and looted their wealth and idols. यानी कि जो सुल्तान महमूद गजनी था जो राजेंद्र फर्स्ट के टाइम पर एक रूलर था, वो जब भारत आया तो उसने बेसिकली यहाँ के जो टेम्पल्स थे उनको ही निशाना बनाया. वाई सो? बिकॉज द टेम्पल्स वर द मेन सोर्स ऑफ द इनकम दैट टाइम. ओके यानी कि जो टेम्पल्स थे वो हर तरीके की एक्टिविटी का सेंटर थे, इकोनॉमिकल, कल्चरल एंड वट एवर द एक्टिविटीज़ वर गोइंग ऑन दैट टाइम, द टेम्पल्स वर द मेन सोर्स ऑफ दैट एक्टिविटीज़. सो दैट्स वाई द ट्रेजरी वॉज ऑल्सो कलेक्टेड इन टेम्पल्स ओनली. तो जितनी भी ट्रेजरीज होती थी यानी कि खजाना या फिर इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती थी वो सारी पहले टेम्पल्स में ही कलेक्ट करके रखी जाती थी. एंड दैट्स वाई द एम्परर्स दोज वर अटैकिंग ऑन द किंग, दे वर फर्स्टली दे लूटेड द एम्परर्स treasury from the temples and even they destroyed the temples to show their power. अपनी जो पावर थी उसको दिखाने के लिए वो टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर देते थे. ओके सो स्टूडेंट्स, here we can see that how and why the emperors and the kings were forming the temples and the mosques as well as the tanks, and how the enemies of that emperor or the kings were destroying them and why they were destroying to them. क्योंकि राजा जो थे वो किसी भी स्ट्रक्चर को बनवाते थे, क्यों? अपना जो पावर है, अपनी वेल्थ है और अपना डिवोशन है उसे दिखाने के लिए. और जो उनके एनिमीज़ होते थे वो उनको डिस्ट्रॉय कर देते थे. क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि अगर हम राजा के जो उसने अपने रिलीजियस आर्किटेक्चर्स बनाए हैं अगर हम उनको नष्ट कर देंगे तो एक तरीके से जो राजा है उसका आधे से ज़्यादा राज्य ख़त्म हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, when the Mughal came to India, they showed a keen interest to show the architecture, art and the literature what they received from their ancestors. यानी कि जो मुग़ल थे जब वो भारत आए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो था आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर में दिखाया, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें अपने जो जिंगिस खान एंड तैमूर लेन की जो डायनेस्टी थी वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने सीखी थी. ओके सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू टॉक अबाउट दैट द मुगल आर्किटेक्चर वॉज मोर कॉम्प्लेक्स. If you will see the buildings which were formed in the Mughal times like Lal Killa, Taj Mahal and that Buland Darwaja and many more are there. So if you will see them, these are architecture which are showing a complex designs
and these are also so much beautiful. The inscriptions which are mentioned inside of the buildings, these are also so much beautiful. And if you will see, students, if you have studied in 4th chapter the Mughal Empire, in that you have studied about all the Mughals were so much interested in the art and architecture, like especially Babur, he also so much interested in that. Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, even Aurangzeb, they all were the patrons of the art, literature and the architecture. So what were the things which were formed by the Mughal emperors? Which buildings were there? What is the architecture of that building? Let's see in the topic garden, tombs and forts. Students, the idea to make garden near around their fort in the Mughal Empire, it was took from the Lodi dynasties. यानी कि जो मुगल्स थे उन्होंने अपने किले के चारों ओर बाग बनाने शुरू किए थे, यानी बगीचे, गार्डन्स। द आइडिया, उन्होंने जो आइडिया था वो जो लोधी एम्पायर था, लोधी डायनेस्टी थी, वहाँ से इसे लिया था। लेटर द गार्डन्स विच आर फॉर्म्ड अराउंड द फोर्ट ऑफ द मुगल्स, दे वर नोन एज द Char Bagh. Students, if you will see in your book, page number 66, here are few pictures related to the Char Baghs which were formed in the different year in the Mughal dynasties. So students, here few designs are there of Mughal Char Baghs. First of all, in A1, the Char Bagh in Humayun's tomb. ये जो चार बाग है हुमायूं के टॉम्ब के चारों ओर बना हुआ है। स्टूडेंट्स, टॉम्ब मीन्स मकबरा। ओके, secondly, if you will see, this is also a design of Char Bagh which is in 1620 and 1634. It is a terraced Char Bagh at Shalimar Garden, Kashmir. ये जो चार बाग है शालीमार गार्डन कश्मीर में बना हुआ है। ओके, and the third one is the Char Bagh adapted as a river front garden at लाल महल बारी। ये भी चार बाग का डिज़ाइन है जिसमें कि फोर्ट के चारों ओर, इफ़ यू विल सी हेयर द फोर्ट एंड ऑन द फोर कॉर्नर्स हेयर इज़ द गार्डन, और ये 1637 में बनाया गया है। ओके, हियर आर मैनी एग्जाम्पल्स। इफ़ यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर, इट हैज़ ऑल्सो a good example of the Char Baghs. What has written here? 1590 painting of Babur supervising workers laying out the Char Bagh in Kabul. So यहाँ पर पे जो बाबर है वो ऑब्ज़र्व कर रहा है कि जो वर्कर्स हैं चार बाग के वो ठीक से काम करते हैं नहीं करते हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हाट वाज द स्पेशलिटी ऑफ चार बाग? The speciality of Char Bagh, first of all, these were formed very beautifully, and if you will see in the picture, the Char Bagh, they were formed like this. It is a simple figure of Char Bagh. If the fort is there in between, the Char Baghs are formed at the corner side of the fort. Okay, and same like that. And if you will see the Char Baghs design, there few artificial canals were there through which the gardens can be irrigated easily. यानी कि जो वहाँ पर चार बाग थे उसमें आर्टिफिशियल कैनल्स यानी नहरें बना दी जाती थी जिसके थ्रू की जो गार्डन हैं उनको सींचा जा सके, यानी कि वहाँ इरिगेशन किया जा सके, उनको समय से पानी दिया जा सके और जो गार्डन है वो हमेशा ग्रीनरी से फुल रहे। फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द मुगल आर्किटेक्चर दैट लेटर दे यूज द टॉल gateways in their buildings, especially in the tombs and the other secular buildings. उन्होंने उसमें जो थे बड़े बड़े जो थे गेट्स वगैरह बनवाने स्टार्ट कर दिए थे। एंड फर्स्टली वी कैन सी दिस टाइप ऑफ गेटवेज इन द हुमायूं's tomb. Students, if we talk about the golden age of the art and architecture during the Mughal period,
The time of Jahangir and Shah Jahan was known as the golden era of the art and architecture. Why so? Because that time Shah Jahan and Jahangir, they both were the patron of the art and architecture and literature as well. So students, here I am giving you some specialties of the art and architecture during the Mughal time, and you can also watch the buildings which were formed during the Mughal time. Students, if we compare the art and architecture in all the three parts of the medieval architecture, the architecture during the Mughal period was much more grand and magnificent. Even every Mughal emperor has formed few monuments, like many were there, like many kind of havelis, some jharokas, some gateways, baulis like kuan. Okay, and some fort and palaces, Red Fort you all know, some palaces also there like Golconda Fort, and if you will see the gardens, that Nishat Bagh, Shalimar Bagh, and that Pinjore Bagh, many gardens are there which were formed by the Mughal emperors, especially in the kingdom of Jahangir and Shah Jahan. Students, if we talk about the Muscules, there were many Muscules which were formed in the Mughal Empire. Firstly, Babur constructed many Muscules in Agra, Bayana, Dholpur, Gwalior, etc. Okay, and a mosque usually has adorned prayer hall with an open courtyard in front. जो मॉस्की होती है वो क्या होती है, उसमें एक काफ़ी बड़ा प्रेयर हॉल होता है जिसमें कि आगे से वो खुली भी होती है और उसमें काफ़ी सारे लोग एक साथ बैठ कर के प्रेयर कर सकते हैं. Students, if we talk about the Shah Jahan's region, the region of Shah Jahan is known in the Indian history as the golden age of Mughal architecture. It was during his reign the Mughal architecture reached its excellence. He is rightly called the engineer king and the prince of builders. यानी कि जो शाहजहां था उसे इंजीनियर किंग और प्रिंस ऑफ बिल्डर्स भी कहा जाता था. वाई सो? द मोस्ट splendid of the Mughal tombs and the most renowned building in India is the Taj Mahal at Agra, the tomb of Mumtaz Mahal, the wife of Shah Jahan. ओके, यानी कि जो सबसे सुंदर और सबसे अच्छा आप बोल सकते हो कि आर्किटेक्चर कहा जा सकता है ताजमहल, वो भी शाहजहाँ के टाइम पे ही बनाया गया था. ओके, एंड मैनी मोर बिल्डिंग्स वर देयर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द शाहजहाँ's time. The students, if we talk about the architecture of Taj Mahal, it is known as Pitra Dora. Why? Because in this design the building was surrounded by gardens, use of marble and decorating the walls with floral designs made of semi-precious stones were introduced in this method, and this method of decoration is known as Pitra Dora. These designs add to the beauty of the Taj. The building is a marvelous blend of Indian, Central Asian and Persian style of architecture. Even Shah Jahan is remembered in history for more monuments, like some are there: Moti Masjid at Agra, Red Fort and Jama Masjid at Delhi, and the most precious throne of the world, the Takhte-Taus, Peacock Throne. And many are there which were formed in the empire of Shah Jahan. Students, the art and architecture, as I told you, it is the way through which we can give or pass our idea from one age to another. यानी कि जो आर्ट और आर्किटेक्चर साथ ही साथ लिटरेचर, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू एक एज
अपने आइडियाज़ को दूसरी एज तक पहुंचा सकती है. इफ़ यू कैन सी द आर्ट एंड आर्किटेक्चर विच वॉज स्टार्टेड in the early medieval period, it was passed on to the another kingdom. Later it was adopted by the Delhi Sultanate, and then after that it was adopted by the Mughals. Even after Mughals it was adopted by the Britishers as well. Even students, if you will see the architectures, the all kind of buildings, the architects, they adopted the ideas from the previous one architecture. चाहे कोई से भी आर्किटेक्ट हो, उन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई आइडिया पुराने आर्किटेक्चर से ही लिया हुआ होता है. एंड आफ्टर दैट दे आर यूजिंग देयर इमेजिनेशन ऑन दैट आर्किटेक्चर एंड दे आर मेकिंग अ न्यू काइंड ऑफ आर्किटेक्चर. ओके students, if you will see, there are many specialties in the empire of the different king. For one example, I'm showing to you in your book, that is in page number 70. If you will see in this, students, if you will see, it is near around the Yamuna river, and here is a place which is the emperor's residence. Can you find out this? आपको पता चल रहा है कि इसमें जो राजा का महल वगैरह है वो कहाँ पर हो सकता है? सी एज इट वॉज द स्पेशलिटी ऑफ द मुग़ल एम्परर दैट इज़ नोन एज चार बाग. जो चार बाग थे यानी कि बाग बगीचे, वो जो मुग़ल डायनेस्टी थी उसकी बहुत बड़ी स्पेशलिटी थी. सो इफ़ यू वांट टू सर्च वेयर इज़ द किंग्स रेजिडेंस, यू हैव टू सर्च द गार्डन फर्स्ट इन दिस मैप. सो इफ़ यू विल सी हियर, देयर आर मैनी गार्डन्स नियर अराउंड द यमुना रिवर. ओके, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे गार्डन्स बने पे हैं. एंड इफ़ यू विल सी इन दिस पिक्चर, एज दिस एरिया इज़ सो मच क्राउडेड, यू कांट फाइंड आउट द किंग्स रेजिडेंस प्रॉपरली, बट इफ़ यू विल सी द गार्डन्स आर हेयर. okay, and between the gardens, as it was the specialty of the char bags, these were cornered side of the पैलेस. जो ये चार बाग होते थे, ये जो आपके पैलेस होते थे उसके चारों ओर से होते थे. यानी कि जो राजा का पैलेस था, इफ़ यू विल सी हियर एज वेल, राजा का जो महल था वो चारों ओर से बगीचे से घिरा हुआ होता था. ओके, सो हियर यू कैन सी द सिटी अपीयर्स टू बी वेरी क्राउडेड, बट डिड यू नोटिस द मैनी लार्ज गार्डन्स एज वेल. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े बगीचे लगे हुए हैं. सो हियर यू कैन फाइंड द स्ट्रीट एंड द जामा मस्जिद एज वेल. सो आप यहाँ पे आप सड़क भी देख सकते हैं. इवन यू कैन सी द जामा मस्जिद एज वेल, एंड इट इज़ सिचुएटेड नियर अराउंड हेयर. ओके, टू प्लेसेस आर देयर वेयर द मॉस्क्यूज आर देयर. ओके स्टूडेंट्स, द चार बाग वॉज द स्पेशलिटी ऑफ द मुग़ल एम्पायर. यानी कि जो चार बाग बने हुए होते थे वो मुग़ल एम्पायर की सबसे बड़ी स्पेशलिटीज़ थी. वट एवर द मॉन्यूमेंट्स एंड द बिल्डिंग्स, मॉस्क्यूज एंड वट एवर द आर्किटेक्चर वॉज फॉर्म्ड बाय द मुग़ल एम्पायर, in that the gardens are very special appearance. Why? बिकॉज जो गार्डन होते थे वो किसी भी फोर्ट को या किसी भी एरिया को बहुत सुंदर दिखाने का काम करते थे, और साथ ही साथ इससे वो नेचर के और ज़्यादा पास रह सकते थे. स्टूडेंट्स, whosoever was the emperor or the king during 8th to 18th century, but they adopted the art and architecture from their previous emperor. तो यानी कि जितने भी आप देखते हो, जितने भी एम्परर थे मेडिवल टाइम के, सभी ने कहीं ना कहीं से आर्ट और आर्किटेक्चर जो था वो अपने पहले वाले राजा से कहीं ना कहीं से अडॉप्ट किया था. इवन आई टोल्ड यू अबाउट दैट चार बाग वन thing that is also adopted by the Mughals from the Lodi dynasties. And if you will see the tomb one architecture, it was adopted by the shikharas which were formed in the ancient time. यानी कि जो टॉम्ब का शेप था, भले ही वो थोड़ा सा ज़्यादा स्फेरिकल था, गोल था, बट इट वॉज अडोप्टेड बाय द शिखरास एंड द गोपुरम्स. जो मंडलम, गोपुरम और शिखरास होते थे, वहीं से जो टॉम्ब के आर्किटेक्चर्स हैं वो लिए गए हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक सो द टॉपिक्स विच आई हैव एक्सप्लेन टू यू, दीज आर क्लियर to you. So students, here I'm providing you few keywords which you have to note down in your notebook. And students, here the chapter is complete. Hope you understood this.
we will know more about our medieval history in our upcoming chapters. So students, for that keep watching SST June.